नमस्ते, स्वागत है आपका ईयरशॉट पे। आप ईयरशॉट पे लाइव पॉडकास्ट देख रहे हैं, फेसबुक लाइव है ये। बहुत जरूरी मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं यहाँ पे और बताते हैं कि इनके पीछे कारण क्या है। और आज जैसा कि हमने बताया हुआ है कि टॉपिक ये रखा है हमने कि महंगाई क्यों बढ़ रही है अचानक से और इसके पीछे कारण क्या है, और इससे अगर निजात मिलने वाली है, उम्मीद है, तो कब तक मिल सकती है। इन तमाम बातों पे हम जो प्रश्न है, आप सबके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब लेंगे दो बहुत ही सीनियर पत्रकारों से जो ईयरशॉट में मेरे सीनियर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नागेंद्र शर्मा जी, आप राजनीति को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, और मेरे सीईओ गौरव चौधरी जी जो कि बिजनेस के जो नामचीन पत्रकार हैं देश के, चुनिंदा उनमें से एक हैं। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस प्रश्न का जवाब लेते हैं। और कई लोगों की शिकायत है कि भाई पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण से सब्जियों तक पे असर पड़ा है और दूध, जो भी चीजें हमारे किचन में आती है वो सारी महंगी हो गई हैं। कारण क्या लगता है आपको गौरव जी? Namaskar and good evening, Nagendar and Manish, for having me on the show yet again. This is a very important topic. And Gaurav, welcome to today's episode of News Decoded. We have Manish today doing it. News Decoded, and it is it's one of those topics that affects everyone, from the person on the street to the business baron, although they feel a little less because of affordability. Also, please bear in mind that inflation is like a tax on the poor. Just to put things in context, where we stand now, consumer price inflation or retail inflation measured by the consumer price index today stands in the month of February, in the month of March stood at 6.07. In the month of February stood at 6.07%. That's going to go up significantly, or expected to go up sharply when the March results data is out, because that will incorporate a sharp rise in retail petrol and diesel prices. Petrol and diesel prices have been rising successively for almost every day in the range of 80 paisa to 1 rupee a litre, and has reached in some cities close to 120 rupees a litre for a litre of petrol. It is primarily because crude oil prices are rising very, very sharply because of the ongoing Ukraine-Russia conflict. And the current rise in petrol and diesel prices essentially is some sort of a catch-up that oil marketing companies are doing, because we were in the middle of assembly elections to 5 states, and during those days, for some reason, petrol and diesel prices were not increased. No guesses for no marks for guessing why those days the prices were not increased. But every time petrol and diesel prices starts going up, it actually has a cascading effect on prices of other goods, primarily food products such as vegetables, because petrol and if diesel prices go up, it actually pushes up the cost of transporting goods from one point to another point, or one place to another place in the country. And our food inflation currently stands at 5.85%. Consumer price index, consumer food price index tracks changes in retail prices of food at the shop end level. If that is growing at such a high clip, it's not good news. It is making getting by get harder for everyone. It is affecting everyone. Just a few details. It's not just that only, it's not just about food. Everything else is rising. Say, for instance, within food, edible oil, for instance, has in the month of February grew by 16.44% compared to the same month last year. Milk prices went up by 3.81%. Prices of meat and fish went up by 7.45%. And prices of prepared meals, snacks and sweets, which essentially is a proxy to measure changes in prices, or how costlier a meal would have become in a restaurant, or even how, if you want to find out how samosas, for instance, or sweets or mithai packets would have been costly over the last 1 month or one year, it means they become costlier compared to last year.
This is clearly not good news, particularly at a time when income levels are not rising as one would have expected. And that is why it's going to pinch, and it's pinching everyone. By when you expect prices to come down is anybody's guess, but clearly a lot will depend on how monsoon rains behave this year, because 70% of our crop production is monsoon dependent. So unless there is fresh supply of vegetables and fresh supply of food products that hit the market, and if monsoon for some reason is below normal, then this situation, the situation about inflation could actually worsen, particularly food inflation. मामला और खराब हो सकता है यहाँ से, जैसा कि गौरव सर ने बताया। तो एक सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को या पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से बाकी महंगाई को देख रहे हैं। ऐसी नौबत पहले भी आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े। उस दौरान ऐसा क्या मैनेजमेंट था, फिलहाल क्या व्यवस्था की जा रही है? नागेंद्र सर, आप बताएं। देखिए मनीष, जो गौरव ने 2-3 बातें कही इससे पहले कि हम राजनीतिक पहलू का, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि फरवरी में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। ठीक है। इसलिए जो गौरव कह रहे थे कि किस कारण से, और उस कारण का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, अगर उसके दाम बढ़ रहे थे तो वो भारत में नहीं बढ़ाए गए क्योंकि चुनाव थे। और उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि नवंबर में कुछ बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव। वो उपचुनाव रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हारी और उन्होंने दाम कम किए, बहुत हल्के से कम किए। क्योंकि ये मैं गौरव से समझना चाहूंगा कि एक और गौरव जो क्रिटिसिज्म है इस सरकार का, आलोचना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि आपने ऑयल कंपनीज पर इंडिया में छोड़ा हुआ है, लेकिन जब दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहे होते हैं तो भारत में दाम कम क्यों नहीं होते? तो आपने जो कहा कि कुछ किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। और गौरव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मनीष हेडलाइन बनेगी। जिस दिन मॉनसून का फोरकास्ट आएगा, आकलन आएगा, और अगर कहीं वो नॉर्मल नहीं रहता, सामान्य नहीं रहता, तो ये कीमतें नीचे नहीं आने वाली। अब इसका कोई क्यों, ऐसा नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है, सरकारें कोशिश करती हैं हर साल, और ये एक तरह से ये एक मजबूत सरकार है, लेकिन इस सरकार को कोई अभी राजनीतिक नुकसान नहीं दिख रहा है। आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य माना जा रहा था, वो चुनाव मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश जीत ले, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, गोवा, जहां एक तरह से ये माना जा रहा था कि सरकार बदलती है, एंटी इनकम, वो नहीं होकर देखिए सरकार के कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, राजनीतिक नुकसान शायद नहीं हो, लेकिन मैनेजमेंट। अब देखिए 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं। गौरव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए इनकम, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, दाम जैसे बढ़ रहा है, तो केवल पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ रहा, आपका सीएनजी का बढ़ रहा है, और उस सबसे जो सारी जरूरी चीजों के दाम बढ़ते हैं मनीष, वो नीचे नहीं आते। अभी आप देखिए नवरात्रों का त्योहार नवरात्रों का ये सीजन चल रहा है, ये इसमें आप देखिए कि फल, सब्जियां, नींबू, इनके दाम आप देखिए तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन हाहाकार क्यों नहीं है? हाहाकार इसलिए नहीं है कि एक तरह से जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, ठीक है, थोड़ा बहुत संसद में चल रहा है, वो नहीं है, प्लस देखिए देश का स्वरूप बदला है, लेकिन स्थिति गंभीर है। यहां में गौरव से बिल्कुल सहमत, फर्क तो पड़ा है। कल ही हम लोग बातचीत कर रहे थे न्यूज रूम में, इनफैक्ट तो ये मालूम चल रहा है कि 200 रुपए किलो नींबू है, कहीं 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा है। तो सोचने वाली बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हम खरीदते हैं, देखिए मनीष, जो लोअर क्लास है उसके लिए हाई महंगाई की स्थिति है, बिल्कुल। हाँ, इसको मैं गौरव से समझना चाहूंगा, मिडिल क्लास के लिए भी है। गौरव सर, एक बात और मुझे बहुत जरूरी जाननी है, तेल की कीमतों को हम बेस में लेते हैं कि उसी वजह से महंगाई की शुरुआत होती है और सारी चीजें बिगड़ती हैं। 2008 के टाइम पे वैश्विक मंदी का दौर था, और जहां तक मैं जानता हूं, आप करेक्ट करेंगे मुझे गलत बता रहा हूं, उस टाइम पे अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, 147। हाँ। तो क्या हुआ, कैसे कालांतर में चीजें बदलती गई, और अब जो ड्यूटी और टैक्सेस का हवाला दिया जाता है, कुछ रिसर्च में मैं भी देख रहा था कि 60% तक इजाफा हो जाता है रिफाइनरी से डीलर तक आते आते।
डीलर का भी अपना कुछ उसमें मुनाफा देखना होता है। ये क्या सिस्टम है? इसको मैनेज नहीं किया जा सकता है क्या? वो जो 200-300 रुपए किलो हम नींबू खरीद रहे हैं उससे बचने के लिए। Good question. And the reason why petrol and diesel prices are high, one of the reasons, is also because of extremely high state and central taxation. And you were right. About 60% of what we pay for a liter of petrol or also diesel actually go in taxes. So if you remove the taxes, the price of petrol and diesel will probably be less than half of what it is today. But why can't the government do it, or why can't the governments do it? Petrol and diesel and petroleum products are still not part of GST. So states can impose VAT and central can impose excise duty, which they have been doing. Successive governments, center and the states, have been using petroleum products as milch cows. This is something that they would not like the tap to stop. If you start cutting down petrol excise duty, if the center starts cutting down excise duty on petrol and diesel, and if the states reduce VAT, lower VAT on petrol and diesel, it affects their tax revenue collection significantly. This is particularly true for states. So it's very easy politically to say that why don't states start reducing VAT on petrol and diesel? But I hold no brief for any state government. But in defense of that, I will say that after GST came into force about 5 years ago in 2017, 30th June, midnight of 30th June and 1st July, states have been significantly robbed of their fiscal powers. They have hardly any fiscal powers. They cannot impose VAT on goods. They cannot impose VAT on services. They can only impose VAT on products that are outside of GST, which includes products like petroleum products and alcohol, etc. If you take that power away from states, then they will have nothing to. They will have very little elbow room to raise revenues. They need some fiscal power. And because of the way the GST has been structured, or because of the way India's indirect taxation has involved, states do not have an incentive or an fiscal elbow room to reduce taxes. वही राजकोषीय प्रोत्साहन की जो बात कर रहे हैं, फिजिकल इंसेंटिव्स की, तो पीछे ये भी हुआ है कि सेंटर ने कुछ ऐसे प्रयास किए, और इसके अलावा देखें तो एक और बड़ा इशू हुआ है सर। आप दोनों लोगों की राय इस पे चाहूंगा। एक तो जो अंदरूनी राजनीति है सो है ही, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी इसमें बड़ा खेल करती है। जैसे कोरोना का टाइम हुआ, तेल की खपत जो हुई वो कम हुई, उसके बाद ओपेक वालों ने क्या किया, प्रोडक्शन कम कर दिया। इस पे भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कुछ ऐसा होना चाहिए ना, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय फोरम पे। इससे तो जो विकासशील देश है वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ओपेक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कार्टेल. It is a cartel. How does a cartel work? Cartel is a group of producers or a group of suppliers, where they decide amongst themselves what the price or the supply will be, and that determines the price. So if the OPEC countries get together and say that we are going to cut supplies or reduce supplies, prices will immediately go up. That is what OPEC keeps on doing now and then. Either they reduce supplies or increase supplies, which has a immediate bearing on crude oil prices. In 2008, the sharp rise in petroleum products was because of a speculative component. In 2022 now, the sharp rise in petroleum products is not because OPEC has cut supplies, but because there is an ongoing war between Ukraine and Russia is the largest energy exporter of the world. So when you have sanctions imposed on the world's largest energy exporter, it affects and disrupts petroleum supplies, crude oil product supplies to the rest of the world significantly. That has pushed up. पर गौरव ये बताइए एक जो आलोचना है इस सरकार की, और ये काफी व्यापक होती है, और इस पर से सरकार का कभी बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब घट रही होती हैं तो भारत ने क्यों नहीं घटा? So the reason is simple. The government does not want to. Government can start. No. Technically, the government doesn't interfere in the prices of petrol and diesel. It is done by the oil companies. Okay. And it is now changes on a daily basis depending on the price of the Indian basket of crude oil. When petroleum prices are rising, oil companies keep on raising petrol and diesel prices. When crude oil prices are falling, the argument is they do not proportionately fall. One of the reasons, and it has
borne out by evidence, is that when crude oil prices are falling, the government actually had raised excise duties to ensure that it keeps on earning extra revenues. It is difficult to raise taxes when crude oil prices are rising. It's easier to raise taxes when crude oil prices are falling. That is the reason you do not see the fall in retail prices of petrol and diesel proportionate to fall in crude oil prices as you see in the case when crude oil prices. लेकिन गौरव, जब राजनीति बीच में आती है मनीष, जब राजनीति बीच में आती है, जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, जैसे ये नवंबर के उपचुनाव के बाद हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र ने भी अपना जो है वो टैक्स घटा दिया और स्टेट्स ने भी घटा दिया। तो इसका मतलब कि अगर ये रहेगा, एक्साइज और वैट रहेगा, तो ये महंगाई की मार पड़ती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो सही कह रहे हैं सर, बीच में बोल रहा हूँ, साथ में दोनों सवालों का जवाब हम ले लेंगे गौरव सर से। हाँ, ये जब से बाजार के हवाले किया गया है कीमतों को, तब से ज्यादा समस्या हो रही है। this is an interesting point. It is, and it is market determined. India moved to market determined prices of diesel. Petrol became market determined much earlier. In diesel in 2014. Yes. So it was then built as one of the biggest reforms in a very complex piece of India's economic legacy that successive governments have found it difficult to dismantle, which is energy economics and market determined prices. That is why when petrol prices, there was a time when crude oil prices fell down to $30 a barrel. Correct. But petrol and diesel prices didn't come down to 40 rupees. The reason is that since November 2014, if you plot the graph, since November 2014 and until say about 18 months or so, the government had increased excise duty, central government had increased excise duty about by 14 times. Oh, yes. By 14 times. The reason is this: it kept on raising excise duty without affecting the retail prices. Because retail prices, the prices that oil marketing companies pay for importing crude kept on falling. So proportionately, the retail prices should have fallen. But the government ensured that the fall in retail prices actually did not translate to lower prices for these retail consumers by keeping on raising the excise duty. That is one. The other thing is that this inflation, whatever we are seeing, whatever is captured by the official price indices actually do not capture the cost of living that all of us suffer from. Correct. There is something called the lifestyle inflation. Yes. Suppose you go to a restaurant, or you go to a salon, or you go to a gym. These are lifestyle costs. These are not captured by India. Does not have a services inflation index. Absolutely. 66 to 67% of India's economy is services. About more than half of what we spend our income is on services. That is not captured. असली पिक्चर तो सामने ही नहीं है. So whatever, if the consumer price in the inflation index is 6%, lifestyle inflation probably would be more than 10%. लेकिन आपके राजनीतिक सवाल पे आप ही की राय, उसी से हम इसको रोकेंगे। आपने ये प्रश्न किया कि कई दफे जब उपचुनाव हो रहे हैं या आम चुनाव या विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तब ये सारी बातें किनारे हो जाती हैं। प्रदर्शन का दौर पहले भी रहा है, आजकल भी छुटपुट प्रदर्शन हो ही जाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। कोई खास असरदार नहीं क्यों होता है? आपने राजनीति को बड़ी करीब से देखा है। आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं जी, इसका विरोध क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो आप इस समय हमारे देश में विपक्ष, ऑपोजिशन जो है वो मजबूत नहीं है, व्यापक नहीं है, पहली चीज। दूसरा, देखिए, स्वरूप बदलता है, विरोध वगैरह का स्वरूप भी बदल चुका है। अब उस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं हो रही है, उसके अलग कारण है, वो किसी और कार्यक्रम में उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि अभी सरकार को कोई उस तरह पॉलिटिकल लॉस नहीं दिख रहा है। वो तो एक पहलू है, कोई राजनीतिक नुकसान नहीं दिख रहा क्योंकि आने वाले दिनों में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन आज के कार्यक्रम में गौरव ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं मनीष, कि एक तो ऐसा अभी नहीं लगता कि इससे कोई छुटकारा मिलेगा, और दूसरा, ये तो अभी असली तस्वीर मॉनसून पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, इसी नोट के साथ लाइव को रोकेंगे कि कहते हैं ना कि तेल में आग लगी है, तो तेल में आग लगने से हमारे घर का संतुलन, बजट बिगड़ गया है। तेल पे जब बारिश पड़ेगी तो मामला ठीक हो सकता है। विभिन्न मुद्दों पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते।